वेलकम एवरीवन इन लेक्चर नंबर 29। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हम सैम्पलिंग फाइनाइट पॉपुलेशन से करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और उस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन का क्या मतलब है। मान लीजिए सैंपल साइज 1 है, ओके, सैंपल साइज इज इक्वल टू 1। आपने एक सैंपल ड्रॉ किया, कैपिटल N पॉपुलेशन साइज है and this N is very very large. तो क्योंकि सैंपल साइज एज कंपेयर टू पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है, तो अगर हम एक सैंपल 1 एलिमेंट मतलब इस पॉपुलेशन से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम दूसरा सैंपल ड्रॉ करते हैं तो इस दूसरे सैंपल के लिए कैपिटल N का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, राइट? बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा मतलब कि जैसे यू कैन थिंक कि ओशन में से अगर आप एक ड्रॉप वाटर की ले लें और उसके बाद दूसरी ड्रॉप वाटर की लें विदाउट रिप्लेसिंग दैट प्रीवियस ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उस सेकेंड ड्रॉप के लिए ओशन का स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ओशन का जो वाटर लेवल है वो ऑलमोस्ट पहले वाले वाटर लेवल की बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सैंपल साइज जब बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन साइज, या पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू सैंपल साइज, तो उस केस में सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करें, दोनों ही इक्वल थिंग्स होती हैं, दोनों ही केस इक्वल होते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है, यानी n इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब यू कैन से कि मान लीजिए n की वैल्यू 10 है या 20 है या छोटी वैल्यू है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऐसी वैल्यू है। तो उस केस में अगर हम सैंपल साइज सपोज 5 लें और ये 5 एलिमेंट्स हम 10 पॉपुलेशन साइज में से ड्रॉ करें, 10 एलिमेंट्स में से ड्रॉ करें 5 एलिमेंट्स को, तो सेकेंड सैंपल के लिए पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड सैंपल के लिए अब पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? केवल 5, राइट? तो अगर आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन की तरह ही ट्रीट होगा, कैपिटल N। लेकिन अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? हर सैंपल के लिए पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। तो जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है तो उस केस में हमें एक स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जो कि हमने पहले पढ़ी थी, सिग्मा बाय रूट n होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के लिए। लेकिन जब पॉपुलेशन साइज फाइनाइट होता है तो उस केस में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो उसको, इस रिजल्ट को मैं एक थ्योरम की फॉर्म में स्टेट करने जा रही हूँ। दैट थ्योरम इज, सपोज दैट a population consists of capital N elements having mean is equal to mu and standard deviation
sigma and that a sample of size small n without replacement मतलब हमने जो एलिमेंट्स ड्रॉप कर लिए वो हम वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में. ओके, without replacement is taken and the sample mean is calculated based on this sample of size n. The distribution of sample mean or the sampling distribution of mean will have the mean equal to mu and standard deviation is equal to sigma by root n square root of capital N minus small n divided by capital N minus 1. This factor is known as finite population correction factor. Finite population correction factor. When n is very large, as you can see, इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिग्मा बाय रूट n में कन्वर्ट हो जाएगा जब n बहुत लार्ज होगा. When n is very large as compared to small n, so this value is approximately कैपिटल N बहुत लार्ज है तो ये वैल्यू कैपिटल N ही आएगी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल N माइनस स्मॉल n और कैपिटल N माइनस 1 कैपिटल N के ही बराबर आएगा ऑलमोस्ट. सो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. सो यू कैन सी कि जो फॉर्मूला था सिग्मा बाय रूट n स्क्वायर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1, this automatically reduces to sigma by root n
when n is very, very large. So correction factor for very, very large population is 1. Okay. So let us take one example to understand how to use this formula. Let us take one example. Let me state the problem. A production company companies 350 hourly employees average 37.6 years of age. ओके, प्रोडक्शन कंपनी के 350 आर्ली एम्प्लॉयज की जो एवरेज एज है वो 37.6 इयर्स है with a standard deviation of 8.3 years. If a random sample of 45 hourly employees is taken, what is the probability that the sample will have an average age of less than 40 years. क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए एक बार. अ प्रोडक्शन कंपनीज 350 hourly employees average 37.6 years of age with a standard deviation of 8.3 years. कंपनीज के 350 hourly employees की एवरेज एज 37.6 years है with a standard deviation of 8.3 years. अगर 45 एम्प्लॉयज का सैंपल लिया जाता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल विल हैव एवरेज एज ऑफ लेस देन 40 इयर्स, मतलब उस सैंपल में जो एम्प्लॉयज हैं उनका एवरेज 40 से कम आएगा. तो हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन वैल्यू is less than 40. Okay. So here we are given n is equal to 45 and capital N is 350. Mu is 37.6. Sigma is 8.3 years.
and okay, every information is noted. So because you can see here capital N is 350, it is a finite population. When population size is provided, it is considered to be finite. So we have to use finite error correction factor. We have to find the sample mean is less than 40. We have to calculate its probability. Okay. So we convert this into Z by subtracting mu and dividing by standard deviation of sample means. And here we write 37.6 divided by sigma x bar. Sigma x bar is the standard deviation of sampling distribution of sample means, which is sigma by root n square root of capital N minus a small n upon capital N minus 1. 40 minus 37.6 divided by 8.3 divided by root 45. It is 350 minus 45 divided by 350 minus 1. We have to calculate this probability. Z is less than 2.07. So here we have the value of mu 37.6. This is sampling distribution of sample means whose mean is equal to population mean. And the standard deviation is this sigma by root n, capital N minus the small n divided by capital N minus 1. This is sigma x bar. ठीक है, इसको Z में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 will be here. Suppose, so we have to find this probability Z less than 2.07, suppose this probability, this area. So what we can do is this, we can write this as 0.5 minus, sorry, we can write 1 minus, because total probability is 1, we can write 1 minus, or you can write simply just 0.5 because half of the area is 0.5 and this area is the area between 0 and 2.07. So from table we look for Z is equal to 2.07. That comes out to be 0.4808. So when you add 0.5 to it, it is 0.9808. This is the answer. अगर आप फाइनाइट करेक्शन फैक्टर यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर आता 0.9738. आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब बहुत सैंपल साइज काफी लार्ज है, काफी लार्ज है उस केस में.
Let's do one more example. Problem number 2. Suppose that during any hour in a large departmental store, the average number of shoppers is 448 with a standard deviation of 21. Shoppers. What is the probability that a random sample of 49 different shopping hours will yield a sample mean between 441 and 446 shoppers. क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करेंगे. Suppose that during any hour in a large departmental store, the average number of shoppers is 448. किसी भी घंटे मतलब किसी भी किसी शॉप पर जो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो 448 होते हैं विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 21. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 49 डिफरेंट शॉपिंग आवर्स चूज करें, जैसे शाम के 4 बजे, सुबह के 10 बजे, इस तरह से इन्होंने 49 डिफरेंट शॉपिंग आवर्स लिए हैं अलग अलग दिन. तो सैंपल मीन की वैल्यू मतलब मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स 441 से 446 के बीच में होंगे. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये नोट कर लेते हैं. एवरेज नंबर ऑफ शॉपर्स, ये पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 21. क्योंकि इसमें कैपिटल एन गिवन नहीं है, इसका साइज गिवन नहीं है, इसलिए हम कैपिटल एन को वेरी वेरी लार्ज मानकर चलेंगे. ओके, तो इसमें फाइनाइट करेक्शन फैक्टर यूज नहीं होगा. सैंपल साइज हमें 49 गिवन है और हमें फाइंड करना है that sample mean will lies between 441 and 446. तो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि सैंपल साइज 30 से बड़ा है इसलिए इसका शेप नॉर्मल रहेगा बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम.
Here the mean of sampling distribution of sample mean, which is denoted by mu x bar, it is always equal to population mean, and it is equal to 448. And sigma x bar is sigma by root n, because population is infinite. Finite error correction factor will not be used. 441 will be here and 446 will be here. This is 441 and this is 446. We have to find this area. Probability means area. So we convert this variable into Z, standard normal variate, by subtracting mu and dividing by sigma by root n. This is replaced by Z. Okay. This is equal to probability 441 minus 448 minus 7 divided by 21 over 49 means sigma by root n matlab 49, and this is 446 minus 448. This is 8 minus 2 will be there. Let me write it again. Minus 2 divided by 21 over square root of 49. This implies we have to find the probability minus 49 divided by 21 minus 14 divided by 21. We have to find the probability minus 7 by 3, and here we have to find minus 2 upon 3. So we convert these into decimals. This is minus 2.33 and this is minus 0.67. We take an idea by drawing the normal distribution. Here we have Z is equal to 0. Here we have minus 2.33 and here we have minus 0.67. This area we have to find. So this can be written as probability minus 2.33 to 0 minus probability minus 0.67 to 0. Matlab we can subtract this area from this total area. The area between minus 2.33 to 0 and the area between minus 0.67 to 0. So we subtract this area from the area between minus 2.33 to 0, then we get this area. So
from table we can see it's 0.4901 and this value is 2.4, sorry, 0.2486. This is equal to 0.2415. So 24% chances are there that when we select 49 different hours, shopping hours, then sample mean will be between 441 and 446. 24% chances. ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ताकि आपको और ज़्यादा लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।